Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Abhishek. Have a seat. Thank you, ma'am. You're Abhishek Kumar Ma'am. from Northwest Delhi. Yes. How are you doing, Abhishek? I am currently working in TIDC India Limited. Okay. Abhishek, tell us something about yourself. Ma'am, my name is Abhishek Kumar and I did my schooling from Pandit Madan Mohan Malviya Rajkiya Samruddhi Vidyalaya and graduation from 𝐂𝐚𝐴 Millia Islamia and passed out in 2021. Okay. We see you have already appeared before the board twice earlier. Yes, ma'am. How was your experience? My experience is quite good. But Can you tell me something about Madan Mohan Malviya? Madan Mohan Malviya is a social reformer and basically he established various education institute. Abhishek, you're from Delhi. And whenever we think of Delhi as rape capital. Delhi is a city that is very unsafe for women. Why do you think that is the case? Okay, have you visited any monuments in Delhi? Yes, ma'am. What have you visited? India Gate And? and 𝐂𝐚𝐴 tomb. Okay, can you tell us something about 𝐂𝐚𝐴's tomb? I'm not able to recall it. It's all right. Abhishek, tell me, why do you want to become an officer? Because ma'am, there's a good career expected in GSF examination and job responsibility is quite good in GSF examination. Okay. If I had to ask you 3 strengths that you have, which will make you a good officer, what will be these 3 strengths? Good technical knowledge. Okay. Have you heard about Great Wall of China? Yes, ma'am, I have had. What is so great about it? Tell me as an engineer. Okay, have you heard of Burj Khalifa? Yes, ma'am, it is the tallest building. It is a Tallest building. tallest building. What is unique about the engineering of Burj Khalifa? The pile foundation. Okay, and? The height of the building is very large, so they are having a wind effect and some of the effect that we should take account for when the height of the building is quite large. Okay, you see, these days pollution due to construction is increasing a lot, especially in cities like Delhi. As an engineer and somebody from civil engineering background, how do you think we can make construction more sustainable and eco-friendly? By using a fly ash, basically, we are basically using a green building toward moving a green building. Basically, that having a less carbon footprint. Okay. And we should construct the building based upon that material that have a less carbon footprint, like fly ash cement, fly ash bricks. Can we make this building green building, the building that you're sitting in right now? Yes, and How can we do that? By providing proper ventilations and by using Do you use social media? no, ma'am, but, yeah. You don't use social media? Okay, over to you, sir. Can you name certain green buildings in India? IGI airport, Indira Gandhi airport. That's currently I'm recording. Madam has asked you about 𝐂𝐚𝐴 tomb. Yes. Is it a green building? No, sir. Why? Yes, sir. Is there proper ventilation? In that 𝐂𝐚𝐴 tomb, do you have proper ventilation? Maybe yes. Fine. Let me ask you about THDC. What is the full form of THDC? There is TD Hydro Development Corporation. What kind of a dam is Tehri Dam? So it is the earthen dam. Tehri Dam is an earthen dam. Yes. Are you sure about it? So it's a rockfill dam. It's a rockfill dam. Are you sure about it? Yes, sir. Can you draw the cross section of the dam? Tehri Dam. So protection of dam. Okay. What about core? What is present in the core of this dam? This core is made up of what? Tehri Dam. So I don't know. Okay. What is the height of the dam? What is the size of the reservoir or the capacity of the reservoir? I'm not sure. Fine. Are there any spillway in Tehri Dam?
Yes, sir. I see. How many spillways are there? 4 spillways, sir. Which kind of spillways are there? Concrete spillway made of the concrete. They are made up of a material by concrete. There is no concrete spillway. Which kind of a spillway are there? I'm not prepared that. Okay, tell me your favorite subjects. My favorite subject is strength of material, structural analysis, and RCC, reinforcement concrete. RCC and reinforcement concrete. Now, tell me, concrete fails under stress or strain? It just depends on the if I designing based on the LSM, then the Let me put it in more simple way. Failure of concrete is assumed to be under stress or under strain. under strain, sir. Under strain. strain. But you define the strength of concrete as M30, M35, M20. How? But the strength of concrete is defined as M25, M30, M40. Why so? Because it is a characteristic strength of the concrete. What is characteristic strength? So it has a 95% probability of the sample having a strength above the characteristic. After strength. how many days you? 28 days, sir. Why 28? Why not 30 or 25, 21? Because of 28 days taken as standard. Why? Why? What is the logic behind it? Because Why of- not 30? Why not 25? This sounds to be good number. 31. Sir. So, what are the various zones of earthquake? So in there India? are five zone basically. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. Zone 1, which state is in Zone 1? Is Zone 1 still there? Maybe not shared, maybe not. Zone 2 to Zone 5. Yeah. You are from New Delhi. Yes. So, Delhi is in which zone? Zone 4. Zone 4. So, now tell me, how would you make a structure earthquake resistant? Sir, What by measures providing, we can take as a civil engineer? by providing symmetric structures and by providing sufficient ductility. Okay. And avoid multi-story buildings and avoid soft story basically. What is soft story? So basically in the basement we generally provide columns, no shear walls present are there. So this is called a soft story and it is not strong in a earthquake point of view. It's not strong. It's not very strong because there is a shear wall is not present. Okay. So- Shear walls are not present in a soft story. Yes, Are you sir. sure about it? Yes, sir. There is only columns. What do you understand by base isolation? So basically base isolation, our main aim is to the ground escalation is not transferred to our structure. So we isolate our structure from the ground vibrations. Okay. So in Burj Khalifa, as ma'am was asking, there's a huge ball inside the building. Why that huge ball of concrete is provided inside the building? The ball is hanging inside the building. Yes. Why is it provided? So it's basically to stabilize the structure if there is suppose there is any tilt or due to earthquake. Why that huge ball is provided inside the structure? Basically for the It center can of mass. swing also. To balance the center of mass, the building. Basically. Why? Okay. Now tell me, if you have an irregular shaped structure and you want to find out the vertical stress due to the load on the structure, what method you will use? Newman's chart basically we can use. Can you draw the chart for me? The radial lines there are chart. And there are 10 radial lines and 20 concentric circles. Sir. Okay. Yes, sir. There is a scale also at the bottom of the Newmark chart. Yes, sir. The scale. How it is used? Means scale. Give me the paper one. Give me the pad also. Yes. So here we have a scale at the bottom of the Newmark chart. What is the significance of this scale and how you will use it? It is basically a, I'm not very sure, but it is a scale of plotting maybe of building. How you would use a Newmark chart to find out the vertical? What are the various steps involved in using the Newmark?
Basically, we are placing our structure in this and I find out the number of concentrics, the number of a portion that the circle cuts. If you have a structure like this hot air is there, it is applying certain load on the soil. Yes, So how you would use this Newmark chart to find out the vertical stress due to the load on the structure? sir, we are placing geometric structure over the Newmark charts and find out the number of cosine. How you would place the Newmark chart? Newmark chart is very small. Yes, The by plan of the scaling, structure with is the help very- of scaling, sir. So how you would scale down? There's a certain What are the various steps involved? You need to calculate. firstly we have to scale down our structure. How will you scale down? So we have to take certain reference depending upon the scale that is given in the march. What is the reference? Means the dimensions, how you will scale down using that. That only I have I don't know. no idea. Okay, what are the various methods used for finding out the vertical stress due to point load? Boyle's equation and Westergaard equation. Which one is more accurate? So it depends on the type of the soil that are present. If our soil is homogeneous, basically if not present in the form of layers, then we use Boyle's, and if the soil is present in the form of layers, we have to use Westergaard equations. Generally, in the field also, you will find non-homogeneous deposit only. So if your soil is non-isotropic, if it is a stratified deposit, you always go for Westergaard's. Yes, sir. So which one is better? For this type of soil, Westergaard is better. But we generally use this Newmark chart is based on which theory? Sir, Boyle's equations. Boyle's. So why it is not based on Westergaard's? No. Means we want to say that Westergaard's theory is more versatile. More versatile. But then also we are using Bosnick theory. Why? Can you write down the Bosnick equation for me? Yes, sir, yeah. 3 q by 2 pi z square. And can you write the Westergaard's equation? Yes, sir, yeah. Okay. At what R by Z value the Westergaard stress and the Bosnick vertical stress will become this? I remember this. Maybe 0.48 or 1.48. Not very sure. Okay. Sorry, you think. Abhishek, it looks like you are a bit nervous. So you can sit comfortably and then you can answer. Okay. Abhishek, tell me what is a truss? For definition, I'm not able to recall. Okay, so you can tell me approximately what a truss is. What do you, So if there you is don't axial force. understand? There is only axial force present in a truss. So these are members which are only loaded to axial force. Axial. Okay, can there be a movement in those structures? So the moment may be there, but the moment value is insignificant as compared to their axial forces that are. Okay, so can axial force lead to shortening or lengthening of the member? Yes, sir. Due to this axial force, the member getting, because if there is having compression, then the member having compression, they have a short in length. If the member is having tension, the length may be. So while doing the calculation, do we assume those length change? So basically, in the analysis form, we are basically the external load is over there, and from this we can calculate what is the joint displacement. And So let's say you are designing an airport where you are having a truss structure. Will you consider the shortening or lengthening of the members while doing the calculation? yes, sir, we have to take. We have to take. Okay. What are theories of failure? So there are different type of theories of failure: maximum principal stress theory, maximum principal strain theory, maximum shear stress theory, and maximum distortion energy theory. These are- Where do you use maximum shear stress theory? in which we have a ductile material. Maximum shear stress is used where we have? Basically, it is more suitable for ductile material. It is a more conservative theory, basically. Okay. So what is von Mises theory? Maybe maximum distortion energy theory. Okay. So out of maximum distortion energy theory and maximum shear stress theory, for a ductile material, which one will we prefer?
if we design very conservative way, so maximum shear stress theory will be good. So let's say buildings. Will you use distortion energy theory or will you use shear stress theory? We said shear stress theory because it is more safer side. Okay. What is the difference between mild steel and a high carbon steel? So basically, the percentage of carbon in high carbon steel is quite high, and mild steel is more ductile as compared to high carbon steel. Okay. So what is the percentage of carbon in both of these materials? So in mild carbon steel, the carbon percentage is around 0.5 to 1%, and high carbon steel is around 2 to 3%. 2 to 2 to 3%. 3%. Okay. Where do you use high carbon steel? We have to get more strength. Where we require more strength. Can you give me an example of that? So the building, in the buildings we use rods. Those are of high carbon steel or mild steel? We have maybe mild steel. Made of mild steel. Why? Because the ductility is mild steel is high. No, but Strength is- the strength wise, high carbon steel will be more having more strength. Okay. In Tehri Dam, which type of turbine is there? This is the Francis turbine. It's a Francis turbine. What is the working principle of a Francis turbine? What type of turbine is that? Sir, it is a inward flow reaction turbine. Okay. Basically, we basically converting kinetic energy as pressure energy into the useful. Okay. So what is the governing equation of this turbine? Francis turbine, by which equation or which energy equation governs this turbine? So basically, by Bernoulli's equation, we can. Is it Bernoulli equation or there is some other form? Heard of Euler's energy equation? Yes, I heard about Euler's equation of turbo machine? it. No. Okay. So when we apply the Bernoulli equation, how do you convert the pressure into energy? So Can we apply Bernoulli equation before the turbine and after the turbine? Yes, sir. We can apply. Yes, sir, we can apply. So what is the basic or If you buy definition of a Bernoulli equation? Basically, energy conservation. Energy Conservation, basically. Is it energy conservation or Conservation. energy conversion? Energy conservation. Conservation. So in turbine you are taking out energy. So we have to account for Fu by gamma cube. F We have to take out the head, useful head that we extract from the that we have extracted. Yes, So you mean to say that you will balance the energy? yes, sir. Okay. What is a draft tube? Basically, draft tube should be installed so that we can basically install our turbine above the tail race without compromising the net head. Why we require draft tube? Because sir, if you install our turbine just in vicinity of the tail race, then the maintenance is quite difficult. So due to which we have to provide draft tube. And So what draft tube actually does? basically, it converts the kinetic energy as well as the pressure energy into the useful head. So what is the pressure at the just above the blade of the turbine? What is the pressure? What will be the pressure? After getting out from the turbine, or maybe Just before the turbine. it is a positive pressure, positive head. And after getting out of the turbine? There may be negative pressure. Now, will it be below atmospheric or above atmospheric? Below atmospheric. Up to what level we can go? Pressure should be high over the vapor pressure, sir. Okay, so what is a vapor pressure? Because vapor pressure, there is minimum pressure. If the pressure fall down below the vapor pressure, then cavitation maybe starts. So Okay, so what is a vapor pressure? the fluid start boiling or start converting to the one phase to the another. Okay, so at that vapor pressure, what is the temperature of boiling? It may be less than the conventional temperature. It will be less than? Conventional temperature. May be less. So let's say water is coming at 30 degrees centigrade. Yes, sir. What will be the boiling temperature of that water? Will it be 100 degrees or it will be 30 degrees or it will be somewhere 60 degrees? It depends on the pressure that we apply, the action pressure basically go on the. So we are going up to cavitation pressure. Right. So what cavitation pressure depends on what parameter? Maybe the temperature of the fluid that is carrying. So water is coming at 30 degrees. The capital pressure depends on that.
Okay, thank you. Okay. My last question to you would be, you're from Delhi and we saw flooding of Yamuna this year in Delhi. As an engineer, tell me, how can this problem be solved? So basically, ma'am, the illegal construction that is near the floodplain, we should be Monitoring all those. Okay. And by preparing flood walls, basically, and by providing a bypass channel, Okay. this can be done. So these are the two suggestions you have. Yes, ma'am. Okay, your interview is over. You can wait outside. We'll call you for feedback in some time. Thank you. Thank you. Abhishek, have a seat. How was your interview today? अच्छा नहीं है क्यों? क्योंकि मैम प्रिपेयर ही नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे कौन करता है, इंटरव्यू देने जाए और प्रिपेयर नहीं करे? मतलब टाइम नहीं मिला? मैम, मतलब 1-2 महीने से स्टडी नहीं कर रहा था। क्यों? मेंस के बाद मैम कुछ स्टडी नहीं कर रहा था। तो क्लियर नहीं करना है क्या इंटरव्यू? हम करना है, मतलब फिर बिना पढ़े कैसे होगा? स्टडी करना है। आपकी इतनी अच्छी रैंक है गेट में, सर बता रहे हैं कि टॉपर रहे हैं आप पास्ट में, और आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस तो उसके बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्टरी थी। स्टडी नहीं कर रहा हूँ, मतलब। तो कुछ फीडबैक है हमारे पास आपके लिए जो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आप खुद ही जानते हैं आपको टेक्निकल रिवाइज करने की ज़रूरत है, सर उसको और इन डेप्थ आपको अभी बता देंगे। जो बाकी जेनरिक फीडबैक है उसमें सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, यू नीड टू इलैबोरेट मोर फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन टू अदर थिंग्स। यू कैन नॉट हैव वन वर्ड आंसर्स। इफ यू आर गिविंग वन वर्ड आंसर्स, दैट मीन्स यू डोंट वांट अस टू आस्क यू एनी क्वेश्चन। जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कैसे होगी? और आपके जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, जो चाहेंगे कि उनकी पर्सनालिटी टेस्ट हो, पर अगर आप ऐसे शट रहेंगे और आप ट्राई करेंगे बस जल्दी खत्म हो जाए ये इंटरव्यू, जल्दी खत्म हो जाए, तो उससे क्या होगा? आप ही का घाटा होगा, बोर्ड का तो कोई घाटा नहीं होगा। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कीजिए, घर जाकर इंट्रोडक्शन तैयार कीजिए, क्योंकि 99% चांसेस हैं कि आपको बोला जाएगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। और इंट्रोडक्शन में स्कूल कॉलेज ही नहीं बताना होता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, क्या स्ट्रेंथ्स हैं आपकी, क्या किया है, विजन क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। तो इस पर ध्यान रखिए। दूसरा, वन वर्ड आंसर्स देने से बचिए, क्योंकि जब आप वन वर्ड आंसर देते हैं इसका मतलब आप बोर्ड को प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो आपकी पर्सनालिटी को और टेस्ट कर पाए, आपसे और कुछ पूछ पाए। अगर आई यू ओके? पानी चाहिए? पक्का ठीक हो ना? इतना कुछ नहीं है। अभी कब है इंटरव्यू, कब है आपका? अभी डेट्स नहीं आई। तो अभी बहुत टाइम है, मतलब हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेहनत करने के लिए रेडी हो ना? यस मैम। हाँ, तो अब अच्छे से तैयारी करनी है, और ये जो फीडबैक है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब दिल्ली में आपको पता है कि क्राइम बढ़ा हुआ है अगेंस्ट वुमेन, पता है ना? निर्भया से लेकर और अभी जितने सारे भी केसेस हो रहे हैं सब पता है ना? तो नर्वस क्यों हो गए, क्यों नहीं बताया? तो एकदम से मैम रिकॉल थोड़ा नहीं। तो इसलिए पॉज लेना है। जब मैंने पूछा सवाल नहीं आता है, 5 सेकंड रुक जाना है, परमिशन ले लेनी है, कैन आई थिंक फॉर अ मोमेंट, इफ यू अलाउ मैम मे आई प्लीज थिंक फॉर अ मोमेंट। ये तो बेसिक सवाल है, आप दिल्ली में रहते हैं, जनरल अवेयरनेस का सवाल है, आपको आना चाहिए। तो नर्वस नहीं होना है, और नर्वसनेस में अपने वर्ड्स अपने अंदर खा नहीं जाना है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है। व्हेन यू विल बिकम एन ऑफिसर, विल यू बी स्पीकिंग लाइक दिस कि किसी को समझ ही नहीं आए? हाउ विल 200 पीपल अंडरस्टैंड व्हाट दे नीड टू डू? So you have to today sit like an officer, और कम्युनिकेट भी वैसे ही करना है। और कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं, पोलाइटली बोल दो, सॉरी सर आई डोंट नो, आई विल गो बैक एंड रीड अबाउट इट। ऐसे इतना परेशान नहीं हो जाना, डोंट नो फिर और परेशान, डोंट नो सर ये भी नहीं आता। उससे क्या कर रहे थे आप? सर के 3 सवालों को आपने एक साथ बोल दिया, डोंट नो डोंट नो डोंट नो, डर गया। एक नहीं आता है कोई बात नहीं, एवरी बॉल इज अ न्यू बॉल। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको सब कुछ आता हो। तो इट इज नेचुरल फॉर यू टू नॉट नो समथिंग, बट 1 2 3 अगर लाइन से नहीं आ रहे उसका मतलब ये नहीं है कि गिव अप ही कर देना है कि अब तो मेरा इंटरव्यू खराब, अब आगे भी खराब ही बोल देता हूँ। ऐसे नहीं कर सकते हैं ना। आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है पास में, आप 2 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, आपके 1 बार इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स भी आए हैं। तो अब आपको उन मार्क्स को बढ़ाना है, ना कि कम करना है। अब टाइम है और ज़्यादा मेहनत करने का, और ज़्यादा फोकस करने का, ठीक है? उस पर ध्यान दीजिए और नर्वस कम रहिए। बाकी टेक्निकली आपको क्या पढ़ना है वो सर अभी एक बार बता देंगे। इस बार कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये सब प्री प्लस में हाँ।
700 around. 700 अराउंड। यार 700 में अगर 50 नंबर भी ले आओगे ना, सिलेक्शन है। बट ये अगर जो एटीट्यूड है, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। ही जस्ट नीड्स 50 मार्क्स मोर मैम टू क्लियर द कट ऑफ। पर 2 महीने पढ़ाया ही नहीं किया आपने, ये तो बात दिक्कत है, मतलब बिल्कुल study- ऐसे नहीं करना है। ये गलत है मैम, वही समझा रहे हैं, समझ रहे हो? केवल 50 नंबर दूर हो। पिछली बार कितने मार्क्स थे लास्ट? 2021 में 759 थे फाइनल टोटल। कितना? 759। मुझे इंटरव्यू मार्क्स बताओ पहले। 126 थे 126 थे 2021 में। में, और 22 में सर इंटरव्यू में थे 116। 116। कितने मार्क्स से रह गया? सर 759 थे तो कट ऑफ 804 गया था, हाँ, तो 45 मार्क्स रह गया। 2021 में हाँ। 45 मार्क्स, ठीक है। और इस बार तो 707 था, कट ऑफ गया था 756, 49 मार्क्स। इस बार ईडब्ल्यूएस से भर। अच्छा, ईडब्ल्यूएस से भरा है। देखो, ईडब्ल्यूएस से भरने से ऐसा जैसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। रीज़न ये है कि कट ऑफ लगभग वही है, ईडब्ल्यूएस की वो देखी ही होगी, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, टेक्निकल बहुत पढ़ना पड़ेगा। 50 मार्क्स का डिफरेंस काफी होता है। अगर आप 2 साल से 50 मार्क्स के डिफरेंस पे रह रहे हैं तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप 2 महीना पढ़ाई नहीं करें। 4 लाख लोग पेपर देते हैं ना, उनमें से कितने लोगों को मौका मिलता है इंटरव्यू देने का? आपको तीसरी बार मिल रहा है। तो बहुत सीरियस मैटर है भैया, पढ़ाई करो। कम से कम टहरी तो बताओगे। कंपोजिट डैम है वो, बीच में कोर। कितने दिन हुए टहरी डैम पे? तो ये 5-6 दिन, मतलब वो 5-6 दिन ही हुए। पढ़ो फिर। ठीक है, पढ़ो, टहरी डैम के बारे में पढ़ो। और ऐसा तो नहीं है कि ठीक है चेयरपर्सन, फीमेल चेयरपर्सन देख के डर गए हो। नहीं ऐसा। अभी तक किस किस के बोर्ड में बैठे हो? एक स्मिता नागराज मैम थी, और तो फिर वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चेयरपर्सन होंगी कि बहुत मेंबर्स हैं यूपीएससी में फीमेल, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी टेक्निकल तो पढ़ना ही है यार। आप इतने अच्छा, यार 180 रैंक है गेट में। देखो, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आप ना डर के सहम के शट होकर बैठ गए कि मुझसे कुछ मत पूछो, बस मैं आंखें बंद कर लूं, जल्दी से इंटरव्यू निकल जाए। ऐसा हुआ था? लग रहा था कि जल्दी हो, नर्वसनेस थी। थोड़ी नर्वसनेस। हाँ, वो अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर आप खेलोगे ही नहीं, समझ रहे हो, तो आपको असेस कैसे किया जाएगा? यहाँ पर आपको बिठाया गया कि आपको असेस करें। अगर आप यहाँ आकर चुपचाप चले जाओगे तो आपको असेस कर ही नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू स्पीक, एंड यू हैव टू स्पीक दैट अदर्स अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं अपने मन मन में नहीं बोलना है। और ये मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। आपको मिला है, इसकी कदर कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए। और आप में पूरा पोटेंशियल है। टेक्निकल तो पढ़ सकते हो ना, नर्वसनेस तो सबको होगी, पर ऐसा थोड़ी है कि टेक्निकली नहीं पढ़ो। आपकी स्ट्रेंथ टेक्निकल है। अगर कुछ और नहीं भी आता होगा आपको और टेक्निकल अच्छे से आता होगा तो भी आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। फिर भी सोशल, जैसे मैम ने पूछा था कि ठीक है दिल्ली आपका रेप कैपिटल है, तो ये तो मतलब एक सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। एज यू आर फ्रॉम दिल्ली, दिस इज बेसिक। कुछ नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी इज कवरिंग योर टेक्निकल, बिकॉज जब आप पढ़ाई कर लेंगे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। आप यहाँ आकर बैठेंगे तो आपको सवाल अजीब नहीं लगेंगे, आप डरेंगे नहीं कि मैं भूल गया, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। पढ़ा हुआ है आपने, आप चाहेंगे कि आपसे और सवाल पूछे जाएं टेक्निकल के, है ना? जब आपने पढ़ा होगा कि सर और पूछ लें, काश ये भी पूछ लें, काश वो भी पूछ लें। दैट्स हाउ यू वुड वांट इट टू बी। और सोशल अवेयरनेस वाला भी थोड़ा सा अखबार पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और दिल्ली के बारे में, आप दिल्ली से हैं उसके बारे में तैयार कीजिए, जो दिल्ली के इश्यूज हैं उसके बारे में तैयार कीजिए। जितने भी बोर्ड मेंबर्स होंगे उनमें से मैक्सिमम लोग दिल्ली से ही होंगे या दिल्ली में रह रहे होंगे, तो ये नेचुरल है कि वो आपसे दिल्ली के बारे में कुछ ना कुछ तो पूछेंगे ही पूछेंगे। कोई मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछ लेगा, कोई सोशल इश्यूज के बारे में पूछ लेगा, कोई दिल्ली की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ भी पूछ सकता है। तो दिल्ली को आपको अच्छे से तैयार करना है, स्मार्टली प्रिपेयर करना है, ठीक है? और इतना नर्वस नहीं होना है, अपना बेस्ट देना है। ऑल आवर बेस्ट विशेस आर विद यू। बादल सर, आपको ऐड करना था। मैंने जो क्वेश्चंस आपसे पूछे थे ना, एज इट इज ये क्वेश्चंस मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए थे। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो वेस्टरगार्ड्स का फॉर्मूला लिखा था ना, इसमें 2 मिसिंग है, जो आपने फॉर्मूला लिखा। तो ना उलझना नहीं है। अगर न्यूमार्क चार्ट नहीं आता था ना, आपको वहीं रुक जाना चाहिए था, या तो बोल देना चाहिए था सर आई हैव नॉट रिवाइज,
क्योंकि आप बोले जा रहे थे, फिर मैं बार बार पूछे जा रहा था उसी पे। और वो स्केल का मीनिंग है डेप्थ जो होती है ना, जिस डेप्थ पे आप निकालोगे वर्टिकल स्ट्रेस, उसका डेप्थ और वो स्केल सेम है, उसी के हिसाब से पूरे के पूरे फिगर को हम स्केल डाउन करते हैं। ये सब फ्लो चार्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सब टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यू में ही पूछते हैं जनरली। तो ये हम लोग जब प्रिपरेशन करते तो इतने अच्छे से नहीं पढ़ते, बट ये सब चीज़ें आप पढ़ो, स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ो। एक सैंपल आपको दे दिया न्यूमार्क चार्ट, ऐसे फ्लो चार्ट बना के पूछ रहे थे। डिज़ाइन, सारे डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स या डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स, फ्लो चार्ट क्या डिज़ाइन स्टेप्स हैं, ये पता होना चाहिए। वहाँ पूछ लेते हैं क्योंकि आपसे ना कि डिज़ाइन स्टेप्स बता दो। फिर मैंने आपसे वो बॉल वाला क्वेश्चन पूछा था, वो डैम्पर की तरह यूज़ करते हैं ताकि रेजोनेंस ना हो जाए। अगर अर्थक्वेक का वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो बहुत डिवास्टेटिंग हो जाएगा बिल्डिंग के लिए, इसीलिए वो बॉल उल्टा चल रहा है, सूडो फोर्स उस पे अपोजिट लगेगा, वो उल्टा चलेगा, वाइब्रेशन को किल कर देने की। ये सब चीजें ना पर पढ़ना स्टार्ट करो, जितना पढ़ोगे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका, आप एकदम अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे से बोल रहे हो, सब कुछ अच्छा है। बट आप आज बोल इसलिए नहीं पाए क्योंकि मैम ने जैसे बोला आप पढ़ के नहीं आए, आपको दिमाग में पहले से ही था जब आप अंदर घुसे कि यार मैं प्रिपेयर तो किया नहीं हूँ, और जैसे ही सर ने 2-4 सवाल पूछे, हुआ ना ऐसा ही कि मन में लगा यार आज तो इंटरव्यू निकल गया। एंड देन क्योंकि सर के आपने सारे सवाल अच्छे से बताए। Abhishek, I'll give you a true feedback. You could have won me and I could have given you best. तुम्हारे जैसे आंसर्स किसी ने नहीं दिए इतने डिटेल में। योर आंसर्स वर ऑन द स्पॉट, वेरी करेक्ट। आपने जो बहुत बड़ी गलती कर दी अपने इंटरव्यू में वो ये थी कि जो मैं आंसर पूछ रहा था आप सही थे, बिल्कुल कंसेप्ट भी आपको पता था, आंसर क्या देना है वो भी आपको पता था। द ओनली थिंग इज आप जल्दी जल्दी बोले जा रहे हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वेट करो। मैंने बोला बर्नौली इक्वेशन कैसे यूज करते हैं, आपने बोला हेड हटा देंगे, ये कर देंगे, कंजर्वेशन इक्वेशन। पोज, 10 सेकेंड्स का पोज लो, मैं पूछ क्या रहा हूं। आपके आंसर्स, कंसेप्ट बिल्कुल सही है, फ्रांसिस टर्बाइन है, एक्शियल फ्लो इनवर्ड रिएक्शियल टर्बाइन है, बर्नौली इक्वेशन ही लगाते हैं, हम हेड कैलकुलेट करते हैं कि हेड कहां पे डिफरेंस है। बट ये आपको सोच के बोलना है। एक एक वर्ड जो आप बोल रहे हो, जो वर्ड आपने बोले थे उससे पहले वो सारे क्वेश्चन मेरी डायरी में यहां पे लिखे हुए थे कि ये मैं आपसे पूछूंगा, पहले ये पूछूंगा, फिर मैं ये पूछूंगा, फिर मैं ये पूछूंगा, सारे एक एक लिखे हुए थे। बिकॉज मुझे पता था कि आपसे वो आंसर कैसे निकलवाने। कैविटेशन मैंने लास्ट में पूछा, ड्राफ्ट ट्यूब पूछने के बाद में आपने मेरे से कैविटेशन पहले बोल दिया। सो यू नो एवरी कंसेप्ट। आपका ये था कि आप सोच के नहीं बोल रहे थे। दैट इज वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, बहुत अच्छी चीज है। इट रिफ्लेक्ट्स कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है, बट आप उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाए। 10 सेकंड में स्ट्रक्चर कर लेना है कि मुझे क्या बोलना है, किस सीक्वेंस में बोलना है। कोई ऐसा वर्ड नहीं बोलना कि मैं फंस जाऊं, समझ रहे हो? तो सोच कर बोलना है। सोचो क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यू कैन टेक 5 सेकेंड्स, आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि हाँ सर ये मेरा आंसर है। और उसका अगर डिटेल में आपको आता है तो वो क्लू दो आप इंटरव्यूअर को कि सर मुझे ये भी आता है, आप इससे पूछो। जैसे आप कैविटेशन बोल रहे हो, कैविटेशन मुझे पता है, मुझे आपसे पूछना है। कैविटेशन के बाद में जब आपने बोला वेपर प्रेशर कम होता है, तो वेपर प्रेशर का टेम्परेचर का कंसेप्ट में लेके आए, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वेदर यू नो दैट कंसेप्ट और नॉट। तो ये चीज आप में अच्छी है, इसको मटेरियलाइज करो, आप आराम से 150 क्रॉस कर सकते हो, दैट्स माय गारंटी। और अभिषेक, जल्दी आपको नहीं दिखानी है, पैनल को जल्दी है, एक अलग बात है। आपको चाहिए कि जितना आप धीरे अच्छे से कर पाए उतना कीजिए। किस बात की जल्दी है? कहीं जाना है तो क्यों जल्दी करनी है? सोच कर बोलना है, आराम से सोच के बोलना है। इस मौके का 3 साल से इंतजार कर रहे हो तो मेक इट योर लास्ट अटेम्प्ट। इस बार जाइए और इसको लास्ट अटेम्प्ट बनाइए अपना, और लिस्ट में आपका नाम हो, हम ऐसी आशा करते हैं और हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको कुछ पूछना है किसी से तो आप पूछ सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जॉब कर रहा है, मतलब कोचिंग कर रहा है, तो उसका मैं सोचा सर बताऊँ ना। अरे बताओ भैया, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जॉब ऐसे नहीं मिला है, कंपटीशन से मिला है। और डैम अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि CWC से कुछ आ जाते हैं मेंबर्स एज अ पार्ट ऑफ पैनल। फिर वो डैम के बारे में जो जैसे सर ने सवाल पूछे ना, सेम टू सेम वैसे सवाल आएंगे।
आप तैयारी से बच रहे हो इसलिए आप कह रहे हो मैं जॉब का नहीं बोलता। अब 2 दिन पढ़ोगे डैम वो पूरा का पूरा कोई पढ़ बहुत जाओगे, बड़ा कोई है बड़ा सर। है ही नहीं वो चीज। डाउट होगा पूछ लेना। और ठीक इनफैक्ट है। आप अपने इंटरव्यू में इसको डालो, Damn Introduction आप में पूरा भी पढ़ डालो। लो, पूरा उसका फ्लूइड हाँ, मैकेनिक्स introduction पढ़ में लो, डालो। सब पढ़ लो। अपने इंट्रोडक्शन इससे क्या होगा, आपने अपना इंटरव्यू पहले ही प्लान कर लिया। पहले ही प्लान कर लिया, आपको 7-8 पता है कि मिनट का एक इंटरव्यू। देखो हाँ। एक दुश्मन है, आपको पता ही नहीं है कौन है, क्या ही सवाल आ जाएगा आपको नहीं पता, और एक है नोन दुश्मन, आपको पता तो है रोज साइड कि पे ये जाना। पॉसिबल सवाल है। मतलब तो आपको अपनी तैयारी ऐसे करनी है, इंट्रोडक्शन में ही बोल दो अपनी जॉब के बारे में, तो उससे पता है कि इस पर सवाल आएंगे तो अभिषेक ने तैयार किया हुआ। और आप तो दैट डैम की मीन्स यू side विल बी पे- लीडिंग योर इंटरव्यू rather than board leading your interview, and that is what smart candidates do. फील द डैम। आप तो साइट पे हो, यू शुड फील इट, और वो दिखना चाहिए। तो ना दैट वुड ऐड अ प्लस पॉइंट कि आपको जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई आप उसको निभा रहे हो। ऐसे ही तो कैंडिडेट चाहिए कि आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में डाला गया, यू आर परफॉर्मिंग इन दैट सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैं बाहर भी आपसे बात किया, अंदर भी आया, तो आप यही लग रहा है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आपको क्या मिला है, तो वो दिखना नहीं चाहिए। समटाइम्स यू विल हैव टू वर्क इन द सर्कमस्टेंसेस जो आपके हिसाब से नहीं है, बट यू हैव टू गो ऑन परफॉर्मिंग इन दोज सर्कमस्टेंसेस एज वेल। प्रिपेयर करो अच्छे देखो से। आप, मुझे जो लग रहा है, यू आर, मतलब आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, मुझे लग रहा है कि आप THDC की लोकेशन से परेशान, दिल्ली के रहने वाले हो, वहाँ पे भी आपको एक नाइट लाइफ और वो चाहिए, वो नहीं मिलेगा भैया। सिविल इंजीनियर हो, CPWD कहीं पे भी जाते हो, कई बार ऐसी पोस्टिंग्स मिल जाएंगी जहाँ पे कुछ नहीं होगा। सबसे पहला काम ये करो, के गर्ग उठाओ और डैम पर डालो, ठीक है। दूसरा काम ये करो, सॉइल मैकेनिक्स उठाओ, अर्दन डैम पर डालो। तीसरा काम ये करो, अपने प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट उठाओ और टेंडर डॉक्यूमेंट उठाओ, पढ़ डालो। ये चीज़ें प्राइमरी हैं जो आपको इमीडिएटली पढ़नी है। साइट पे जाते हो, जाके और एनालिसिस करो, सब कुछ पता होना चाहिए, कितने स्पिलवे हैं, कौन सी मोटर लगी है, पावर हाउस में क्या लगा हुआ है, रिजर्वायर की कैपेसिटी ये है, कितने जगह डूब गए, कितने शहर डूब गए, उनको कैसे रिलोकेट किया गया था, क्या क्या था, क्या क्या इशू आए थे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या था, प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। ये सारी चीज़ें आपको डैम को लेके पढ़नी है। डैम जितना इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उतना डिवास्टेटिंग और लीथल स्ट्रक्चर भी है, ठीक है। आपके पास लगभग 7-8 किलोमीटर क्यूब का रिजर्वायर कैपेसिटी हो, 220 मीटर की ऊंचाई है, लगभग 206 या 220 मीटर की ऊंचाई। ये सारी बातें। फिर मैडम ने जो कहा, आपने मैडम से बात करते हुए 2 चीजें बोली थी, एक ग्रीन बिल्डिंग आपने थ्रो करा, एक आपने फ्लाई ऐश सीमेंट थ्रो करा। ग्रीन बिल्डिंग पे मैं आया, बट आप इतना होपलेस बातें कर रहे थे कि मैं फिर फ्लाई ऐश पूछा नहीं, समझ रहे हो। तो यू हैव टू लुक लाइक ए इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि वो एकेडमिशियन नहीं ढूंढ रहे हैं, वो तो आप हो एकेडमिशियन, यू आर देयर, दे आर लुकिंग लाइक ए पर्सनालिटी हु कैन लीड, हु इज इंटरेस्टेड। वो बेसिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, जिसकी लोग बात सुने, जो लोगों को समझा पाए, जिसकी बात समझ में आए। ये सारी बातें उस थॉट को रखो, इसीलिए आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट वो ले रहे हैं। एडमिशन लेना होता है, उन्होंने एग्जाम कराया, टॉपर्स ले लिया, खत्म हो गया। वो मेंस हो चुका है, नॉलेज टेस्ट हो गई हाँ। मेंस में। अभी टेस्ट कर रहे हैं आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस। उनको लीडर्स चाहिए। यूनानिमसली बोर्ड ने आपको 110 मार्क्स दिया है, ये आपका एवेल्युएशन है, पर हम होप करते हैं कि आप इसको बढ़ाकर 130-140 करेंगे, ले आओगे वापस। ठीक है। वो आप पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करें। थैंक यू अभिषेक, ऑल द बेस्ट। टेक्निकल अच्छा जी। डेफिनेटली।